Good morning. Myself Dr. Manisha, Assistant Professor, Faculty of Physiotherapy Department in RPIIT Technical and Medical Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel RPIT Academics. If you like the content of this channel, please like, share and subscribe. Now today I discuss about the ACL surgical treatment. टाइमिंग ऑफ सर्जरी तो अगर ज़्यादा टीयर हुआ तो उसमें हमारे को क्या सर्जरी की नीड पड़ेगी। तो टाइमिंग क्या आएगी सर्जरी की। फर्स्ट क्या, स्वेलिंग इन द नी मस्ट गो डाउन टू नियर नॉर्मल लेवल, जो स्वेलिंग है उसकी वो कम हो जाए। सेकंड, रेंज ऑफ मोशन जो है बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग of the injured knee must be nearly equal to the uninjured knee. Good quadriceps muscle strength must be present. Usually it takes a couple of weeks after injury before ACL reconstructions can be performed. The presence of any associated injuries to the knee joint involving cartilage, meniscus or other ligament may change the time frame for surgery. Next, ACL tears are not usually repaired using sutures to sew it back together because repaired ACLs have generally been shown to fail over time. Therefore, torn ACL is generally replaced by a substitute graft made of tendon. The graft commonly used to replace the ACL include autograft और allograft. तो autograft में क्या है, हम पेशेंट में से ही जो है लेंगे। हम पटेलर टेंडन ले सकते हैं, हैमस्ट्रिंग टेंडन ले सकते हैं या फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन ले सकते हैं। बट एलोग्राफ्ट में क्या है, हम किसी और दूसरे पर्सनस का ले करके उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें भी क्या हम पटेलर टेंडन ले सकते हैं, एचिलस टेंडन ले सकते हैं, सेमी टेंडिनस, ग्रेसिलस और पोस्टीरियर टिबियालिस टेंडन जो है हम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है पेशेंट को हम ट्रीटेड करेंगे विद सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ द ACL हैव लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट्स ऑफ 82 to 95%। द गोल जो है ऑफ द ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी का प्रिवेंट इंस्टेबिलिटी एंड रिस्टोर द फंक्शन ऑफ द टॉन लिगामेंट क्रिएटिंग अ स्टेबल नी। Recurrent stability and graft failure are seen in patient considerations. Active adult patients involved in sports or jobs that require pivoting, turning, or hard cutting, as well as heavy manual work, are encouraged to consider. Surgical treatment activity, not age, should determine if surgical intervention should be considered. In young children or adolescents with ACL tear, early ACL reconstructions create a possible risk of growth plate injury leading to bone growth problems. The surgeon can delay ACL surgery until the child is closer to skeletal maturity or the surgeon. A patient with a torn ACL and significant functional instability has a high risk of developing secondary knee damage and should therefore consider ACL reconstructions. Now, next is surgical choices. Patellar tendon autograft. The middle third of the patellar tendon of the patient along with a bone plug from the shin and the patella is used in the patellar tendon autograft, occasionally referred to by some surgeons as the gold standard for ACL reconstructions, recommended for high demand athletes and patients whose jobs do not require a significant amount of kneeling. Next,